चलिए शुरू करते हैं। राइट क्लिक, गो टू फॉर्मेट बैकग्राउंड, सिलेक्ट कलर, देन क्लोज। क्लिक ऑन इंसर्ट, सिलेक्ट टेक्स्ट बॉक्स, साइज 36, select white color, right here type of animals, align center, duplicate, go to home, size 18, select color, right here infographic, go to format, align center, select this text and bold. Go to insert, shapes, select rounded rectangle, click on format, shape fill, select no fill, select outline color, outline width size 1/4, size 5 cm and 5 cm, duplicate size 3.5 and 3.5 cm, दोनों को सिलेक्ट करके अलाइन सेंटर एंड अलाइन मिडल। क्लिक ऑन इंसर्ट, शेप्स, सिलेक्ट ट्रायंगल, शेप्स के सेंटर में ड्रैग करें। फर्स्ट राउंडेड रेक्टेंगल सिलेक्ट करें, देन दी शेप, क्लिक ऑन होम, क्लिक कंबाइन शेप, देन सिलेक्ट शेप सब्सट्रैक्ट। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो गो टू फाइल, क्लिक ऑप्शन, सिलेक्ट कस्टम रिबन, सिलेक्ट ऑल कमांड्स, क्लिक कंबाइन शेप्स, देन क्लिक न्यू ग्रुप एंड ऐड पे क्लिक करें, देन ओके। डुप्लीकेट, go to format, rotate, select flip vertical, adjust, again select duplicate and place here, select this, duplicate, set here, select all shapes, then group, duplicate, click on format, rotate, select flip vertical and adjust, select down shape, select this and group, select this shape, right click, go to format shape, select gradient color, then close, go to format, rotate, select flip vertical and adjust. Click on insert, shapes, select rounded rectangle, click on shape fill, select color, outline, no outline, set करिए, duplicate, place here, click on shape fill, select color, again 3 duplicates, एक एक करके कलर चुने, रेड, येलो and pink. Go to insert, click on clip art, search for snake, insert, select shape with snake, then group, search for zebra, insert, size कम करें, place here, select shape, then group, search for frog, insert, press shift, size कम करें, select color, select shape, then group, search for fish, insert, place here, select shape with fish, then group, search for bird,
insert, place here, select shape with bird, then group, select text box, duplicate, place here, type description here, middle, select reptiles, select color, go to home, size 28, duplicate, write about mammals, write about amphibians, write about amphibians, write about aquatic, write about bird, select text box, go to format, select align bottom and set. Select this shape, outline, no outline. Select text box, go to animation, select fly-in, click on animation pane, timing, start with previous, duration 3 seconds slow, then OK. Select this text box, select fly-in, click on effect option, select from top, timing, start with previous, duration 2 seconds medium, then OK. Select this shape, animation, select wipe, effect option from left, timing, start after previous, duration 10 seconds very slow, then OK. Click on this animation, select zoom, add animation, select spin, click first text box, select fly-in, go to effect option, select from left, all three animation of reptiles, go to timing, start with previous 3 seconds slow, then OK. Select this animation, click on zoom, add animation, click on spin, go to effect option, select counterclockwise, select this text box, select fly-in, select all three animation of mammals, timing, start with previous, delay 2 seconds, duration 3 seconds slow, then OK. Select this animation, select zoom, add animation, select spin, select text box, click on fly-in, click on effect option, select from top, select all three animation of amphibians, timing, start with previous, delay 4 seconds, duration 3 seconds slow, then OK. Select this animation, click on zoom, again add animation, select spin, click on effect option, select counterclockwise, select this text box, line, select all three aquatic animation, go to timing, start with previous, delay 6 seconds, duration 3 seconds slow, then OK.
Select this rectangle, click on animation, select zoom, add animation, select spin, select this text box, line, effect option, select from right, select all three animation of birds, go to timing, start with previous, delay 8 seconds, duration 3 seconds slow, then OK। अब स्लाइड शो चलाकर देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हमने इन्फोग्राफिक एनिमेशन बनाने की सभी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप और सबसे आसान भाषा में एक्सप्लेन करने का प्रयत्न किया है। आशा करता हूँ कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार से आप भी अपने प्रेजेंटेशन में इन्फोग्राफिक एनिमेशन ऐड कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।